What would you do when you win $1 million लॉटरी? तुम क्या करोगे उसके बारे में बताएंगे मुझे. Segregate into 5 parts. कोई भी जिंदगी के अंदर आंसर देना हो ना तो उसको 3 या 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो. हमारा ह्यूमन माइंड इतना स्मार्ट है कि जब तुमने उसको 3 पार्ट को डिवाइड कर लिया अपने आप 3 आंसर आ देंगे. You've studied so much. Like the questions which you need to know when you guys need to know their HR specific questions. हाँ भैया बताइए. What you will do? Question number 1. What will you do when you win $1 million lottery? तुम क्या करोगे उसके बारे में बताएंगे मुझे. Okay, काफी लोग बड़ी इंटरेस्टिंग आंसर. Would be working although just for myself and my startup. Money is unstable whereas experience is important. Very good. I would be working but would start my own business. Working, invest on site 7.8 crore. Definitely I'll continue working. I'll go ahead and sit in the home. If I just go ahead and sit in the home to make me lazy. And no matter how much one have, the might ran out. बहुत बढ़िया. So continue working as a good option. बहुत बढ़िया. देखो अब इसने क्या सही आंसर दिया. शशांक बोल रहा है कि यार मैं ना काम तो करूंगा बट ये मनी रन आउट हो जाएगा. तो ये थोड़ा बंदा पेसिमिस्टिक भी है, राइट. थोड़ा सा बंदे की नेचर पता चल रही है कि पेसिमिस्टिक भी है और इसको एट द सेम टाइम ही वेरी वेल अवेयर ऑफ हिमसेल्फ कि अगर मैं कुछ काम नहीं करूँगा तो लेजी हो जाऊंगा, राइट. तो सम पीपल कैन आंसर इन द फुलिश फेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रांजल तेरा अहमदाबाद का इंटरव्यू है. तू बोल रहा है भाई मैं शराब दे दूंगा तेरे को गंदी बातें करेगा तो. हाँ तो ये बोल रहा है कि मालदीव्स जाऊंगा मैं, इन्वेस्टिंग, ट्रैवलिंग, सेविंग. बहुत बढ़िया. लॉयल्टी ओके. यस विल बी working is not for money and I work out of interest. Okay, idle man's brain is devil's workshop. Take the risk to pursue, carry out of my passion. Work still, invest this lottery money in different sector. बहुत बढ़िया यार. पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को देखो भाई ये तेरा नेचर जानना चाह रहा है, ठीक है. आई वुड से सेग्रीगेट इनटू 5 पार्ट्स. कोई भी जिंदगी के अंदर आंसर देना हो ना तो उसको 3 या 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो. हमारा ह्यूमन माइंड इतना स्मार्ट है कि जब तुमने उसको 3 पार्ट को डिवाइड कर लिया अपने आप 3 आंसर आ देंगे. यू स्टडीड सो मच. डैशबोर्ड पे इतने सारे तुम लोगों ने वीडियो सुने, सब कुछ तुम्हारा सेट हो जाएगा. तो भाई पहली बात तो सर आई विल डिवाइड बाय मनी इनटू 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स. इफ यू आस्क मी आई विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. मेरे लिए जिंदगी के अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. Number 1 is doing new things, right? Whether it's CATKing, whether it's my own company, I keep on doing new things. वो मेरा definitely मेरा एक काम है. तो 33% wealth मैं अपनी यहाँ पे लगाऊंगा. 33% of my wealth I'll invest in other sectors, maybe as a venture capitalist, maybe as a VC, because I like to money grow. money बैंक में पड़ा कोई फायदा ही नहीं है उसको. सर थोड़ा सा मैं उसके अंदर 10% 12% FD के अंदर भी लगा दूंगा, because it's also an instrument. All the stock market की बात ना ही करें तो अच्छा है. All the stocks have like hit rock bottom right now. Do you guys agree? भाई लग गए अपने, है ना. क्या क्या बातें करते, ये ले लो, वो ले लो, ये इन्वेस्ट कर लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो भाई स्टॉक्स के अंदर तो अभी FD भी याद आती है. मैं देख रहा था यार रिटर्न अपना, जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की, मेरा रिटर्न वो FD जैसे हो गया, 6% एंड 10%. बिल्कुल इट्स स्टिल टाइम टू बाय. दिस लुक्स लाइक अ टाइम टू बाय राइट नाउ, बट यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, how the Ukraine war is going to come out. Any which ways, so coming back boys, minus 23%. बहुत बढ़िया. तो भाई काफियों का माइनस हो चुका है. So I'll invest my money. And thirdly, I love to travel. We are living on this life. और मुझे पर्सनली लगता है कि the biggest experience in this earth is traveling. अपने मॉम डैड से बात करो, किसी बड़े आदमी से बात करो, यही बोलता है यार I love doing travel. If given a chance, मैं ट्रैवल करना चाहूँगा for sure. तो अपने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो. It's going to be really helpful. समझा. सीधा आंसर नहीं देना है because your thought process they are checking on that. समझा गया. आगे बढ़ रहे हैं. Next one. Very important question. What would you do if your boss is bad? Oh ho. हाँ भैया. Next question. Did anybody have a bad boss? हाँ भाई. हाँ भैया. Okay. I used to go, sir, I do love to travel but never had the opportunity to travel exotic anywhere. ठीक है कर सकते हो but थोड़ा जनरल हो गया. हाँ भाई bad boss. What would you do if you're working with a bad boss? फटाफट बताइए. Then we're gonna open it house and listen to your interview skills. ये एक साइड कवर करेंगे. Keep working, I try to change the company. Keep working, okay, working तो करेगा. Define what is the bad boss. तुम खुद define करो ना, मुझे क्या पूछो. Talk it out with no expectation. My bad boss was also my cousin. बहुत बढ़िया. Okay, मारूंगा, ठीक है. हाँ, ये फुद्दू बातें मत करो यार, अच्छी बातें करो. Loyalty will count with the boss. Okay, my boss used to join office late. There was no backing for the team. I used to hate my boss. The day one I joined, my first boss. The day one I joined, he told me 2 things I still remember, but that made me push really hard. Number 1 thing is उसने मुझे बोला कि देखो यार एक ना ह्यूमन नेचर होती है. Come before your boss and leave after your boss is gone. किसी ने सुना ये वाली बात? हाँ भैया. हाँ भाई. Come before your boss. Have you heard that? ये एक बहुत ही स्मार्ट, कमीने और हार्ड वर्किंग बॉस अपनी टीम को बोल देते हैं भाई. येस बट डोंट एग्री. बिल्कुल एग्री है, वो बात की बात है. बट अगर आपकी टीम है 5 लोगों की और उसके अंदर अगर फ्रेशर्स भी हैं जो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आए, आधा टाइम तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर यही निकल जाएगा कि फ्रेशर को बताना भाई तू कॉलेज के अंदर नहीं है, यहाँ पे तू कॉलेज मिस नहीं कर सकता है, राइट. दैट्स गोइंग बी द टॉपिक राइट नाउ. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा. एंड नेक्स्ट वन यू टॉक अबाउट व्हाट यू थिंक वाज इन आइडियल वर्क एनवायरनमेंट एज वेल. ठीक है. पर्सिस्ट फॉर 2 years, ट्राई टू गेट ट्रांसफर इन द गुड बॉस. इफ योर बॉस इज बैड, द बेस्ट थिंग इज
whatever you guys can do and solve over a cup of coffee, solve over a cup of coffee is really, really amazing. Okay, I think Alejandro sir has joined, but we'll wait for like few more minutes. I'll quickly finish this up. Try to convince him a different perspective and change. बहुत बढ़िया. शिवांश ये बहुत amazing बात हुई. जब भी आपका कोई भी काम ना हो पा रहा हो, you can always change the style in which you're talking it out. If you want to go, you know, abroad and it's not happening, or you've got a new idea, try to use your communication skills in a different format. And also there are ways of top down, bottom up influencing as well. Never ever go to your boss to do it, right? Because if your boss, like for example, if my boss was CIO of General Electric, G India CIO, अमित सर अमेजिंग गाय, अगर मुझे उनसे कुछ कंप्लेंट है तो उसके ऊपर CEO आ जाता है. मैं डायरेक्टली CEO के पास जाऊंगा. What he's going to do? He's just going to call up the CIO and say like, यार तेरे एक बंदे का एम्प्लॉय का मुझे फोन आया था, क्या कर रहा है यार? You can solve your problems on your own, right? So भाई never ever do that. ठीक है? Okay, आगे चलते हैं. What does motivation mean to you, Yuvraj? ठीक है? What does motivation mean to you? हाँ भाई, motivation means to you. Quickly, फटाफट, everyone on the chat. What does motivation means to you? बताइए फटाफट. What is motivation? For me, if you ask me, okay, motivation is the fuel. Rest of the folks, growth. कुछ भी दिमाग में आ रहा है, just type in. Imagine your interview is going on. This is going to be preparing you. Directly, this question may not be asked you in the interview, but they can ask you like, what inspires you to grow as well, right? The drive, all right. Rest of the folks, what else? What else? Self-development, okay. Appreciation, recognition, inspiring people. बहुत बढ़िया, great. Now Tanishq is very smart. Tanishq is seeing it from the other side as well. Tanishq is fitting himself in the shoes of the manager, and rather than he himself talking about being motivated, he's about motivating other people, right? देख रहे हो कितना सही आंसर किया इसने, तो बहुत बढ़िया. तो भाई words, if you need motivation, don't do it. बहुत बढ़िया. I read it somewhere. Motivation is like bathing, you know, it's like bathing. So मतलब it's like nahana. You need it every day. Motivation will only let you get started. But to finish the activity, you need discipline. Discipline is, लिख लो कहीं पे आपको काम आएगा. Discipline is doing one thing at one time every day for rest of the life. One thing at one time every day for rest of the life. That's called discipline. The motivation is just going to start, and after that, Ayush, very good. It's called be consistency only. ठीक है भाई, done है. Next question. आगे बढ़ रहे भाई. What is the dream company looking like? हाँ भाई, तुम्हारी dream company क्या है भाई? Anyone on the chat? What's your dream company looks like? Either a startup with Amazon. Type in a dream company quickly, boys and girls. Okay, Goldman Sachs, Amazon, okay, lovely. HUL, Tata, Google, बहुत बढ़िया. No insight about our dream companies, whatever is the dream company, McKinsey, great. Make sure these companies are coming on campus as well. It's in ITC का मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा भाई, कौन है? राहुल सिंह है यहाँ पे. ITC बोल रहा है, ITC का स्टॉक बहुत बुरा कर रहा है यार आजकल, स्टॉक मार्केट. So would you invest in that company? So banking sector, Shivansh, very good. Deloitte. So know about these companies, they should be coming on campus. It's a really important thing. Know what kind of, ये थोड़ा visualization कर लेगा. What kind of role is there? Have you spoken to someone ever in your life from McKinsey or Tata, whichever, or Facebook or Microsoft? Because if it's your dream company, you should be able to speak about it. That shows like whether this guy is amazing. Yeah, he wants to get into the things and he wants to know in detail. ठीक है. Next one, फटाफट 3-4 क्वेश्चन और कर रहे हैं. I don't have a dream company. Make a dream company if you guys can do that. Okay, Weber बोल रहा है I don't have a dream company because nobody can stay in one company for a lifetime. OMG, what kind of answer is this? ये बोल रहा है मेरी कोई ड्रीम कंपनी नहीं है, बट नोबडी कैन स्टे इन वन कंपनी फॉर अ लाइफ टाइम. इट्स कॉल्ड अ YMB. यो माय ब्रदर आंसर. भाई वैभव निकाल दिया जाएगा भाई, तू क्या कर रहा है यार, इतना तो लॉयल ही नहीं है यार तू. भाई लॉयल रहो, यू नो. तो मैं तो ले लेता, मतलब माई डैड वर्कड फॉर ओनली वन कंपनी फॉर 37 years, राइट? देयर इज समथिंग ऑन लॉयल्टी एज वेल. And if you're talking about this in the interview, yaar, I can take this interview as a stress interview format and literally I can rip you off by saying you're not going to be loyal to your company, you're not going to be loyal to your alma mater as well. आज की डेट में you're joining, IMT Ghaziabad, or you're going to go to SJ Bokoni, or you're going to go to Narsi Monji, or my school SPJain Bombay. कहीं पे भी जा रहे हो तो you have to be loyal in that college. उसके बाद तू ऑक्सफोर्ड जाएगा तो you'll leave your alma mater as well. ठीक है? Yeah, be very specific. It's going to be really, really amazing. आगे चलते हैं. Will be really helpful. Done है? All good? Yes or no? Yes or no? All good? ठीक है? Done है? Okay, great.